So let's start about the introduction of this chapter. A complete reaction is one in which all the reactant have been converted to products. So as I have mentioned before that we have two types of reaction. One is complete reaction. अब ये आपको इसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है कि मतलब अगर आपके पास एक रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया हुआ है, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. लाइक आपको अभी मैंने बताया ना कि आपके पास शुगर है, आपके पास वाटर है, आप उसके अंदर लेमन एटसेट्रा ऐड कर लेते हो, आप इसके बाद आपके पास बनेगा क्या, ड्रिंक. नाउ दिस शुगर एंड वाटर एटसेट्रा आर योर रिएक्टेंट्स व्हाइल दिस ड्रिंक इज योर प्रोडक्ट. अब मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये स्टार्ट है, ये ऐसा ना हो कि आप स्टार्ट से घबरा जाएंगे केमिस्ट्री क्या मुसीबत है. इसलिए आपको डेली लाइफ के साथ लेकर चलूंगा ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो. अच्छा जी, तो कंप्लीट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स क्या हो जाते हैं, सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं किधर, प्रोडक्ट्स में. देखें, आप जब इनिशियली शुगर लेते हो, आप उसको शेक करते हो तो आपको शुगर मिलेगा, लेकिन उसके बाद एंड पे क्या हो जाता है कि सारा की सारा शुगर डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, तो वो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. इसका मतलब है कि दैट इज नोन एज कंप्लीट रिएक्शन. However, many important chemical reactions do not complete and a mixture of product and reactant are formed. कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होंगे जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं. दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन. तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते. दे नेवर गोज टू कंप्लीशन. वी हैव अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. ठीक है. सो दो टाइप के रिएक्शंस आपके पास होते हैं, एक कंप्लीट, दूसरा इनकम्प्लीट रिएक्शंस. और इनकम्प्लीट के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि होता है क्या है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस मूव कर रहे होते हैं. इन सच रिएक्शन प्रोडक्ट रिएक्ट टुगेदर टू रीफॉर्म रिएक्टेंट. लाइक इफ वी हैव अ रिएक्टेंट A and if it combine with a reactant B, it will be converted into product that are C and D. So these A and B are known as reactants, and whenever they combine they will form C plus D, and these are known as products. So in these type of reaction which never goes to completion, होता क्या है कि these reactant will first be converted into product and the product will again combine and they will form reactant. So this is the second type of reaction, and these reactions are known as reversible reaction. These reactions are known as reversible reaction. And what is the major difference between these? Like if we have A reactant and B is the reactant, if it goes to C plus D, now this arrow, this will indicate what this means. This is non-reversible reaction. This is irreversible reaction. This is irreversible reaction. ठीक है, जो एक वे डायरेक्शन में जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट मूव करेगा. इट विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड नेवर कम बैक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. लेकिन in this case, in the reversible reaction, what happen? Reactant A will combine with B and it will move toward right side from left to right, and similarly these products will recombine and it will again give A plus B. Now these are known as reversible reaction. At the same time reactant form product. So these reactions are called reversible reaction, जो आपको मैंने यहाँ पे बता दी है कि जो कभी कंप्लीट ही नहीं होते. फॉरवर्ड मूव करते हैं, बैकवर्ड मूव करते हैं, फिर फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, मतलब ये कभी कंप्लीट नहीं होंगे. एंड दीज आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इज इम्पोर्टेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री. कहते हैं जब आप केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हो, जैसे आपको मैंने बता दिया ना कि आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो. ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली कहाँ पे बनते हैं? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के जो पहला चैप्टर था, यू हैव स्टडी अबाउट द डिफरेंट वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इन विच one of the branch was industrial chemistry. And what is the basic benefit of those industrial chemistry? ये हमारे पास different जो human life को बेहतर बनाने के लिए products बनाता है. ठीक है. Equilibrium reactions are involved in some of the stages in the commercial production of many important chemicals such as ammonia, sulfuric acid, etc. अब ammonia क्या चीज होती है? ammonia का फॉर्मूला आता है आपको? Yes sir, NH3. NH3 is known as ammonia. Similarly, sulfuric acid. What is sulfuric acid? H2SO4. SO4. This is sulfuric acid.
and the process through which ammonia is synthesized in the industry is known as Haber's process. That process is known as Haber's process, and the process in which sulfuric acid is synthesized or made in industry is known as contact process. ये कौन सा प्रोसेस होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है. अब इनके अंदर जब हम अमोनिया की सिंथेसिस करते हैं and whenever we synthesize sulfuric acid within the industry, then we need to have the concept of equilibrium, and that is the main reason behind it that we teach you a chemical equilibrium in your chemistry. In a closed container, the formation of ammonia from its element does not proceed to any great extent. Closed container क्या होता है? For example, this is like a beaker type है, ठीक है? आप इसको यहाँ से इसको बंद कर दो. ये हमारे पास क्या है? This is closed. और ये हमारे पास क्या है? This is open if it don't have any lead in it. Yet, as you will learn in this chapter, this vital substance is manufactured on multi-ton scale annually by applying the principle of equilibrium. अब ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं? मल्टी टन्स क्या? प्रोडक्शन किस चीज की? प्रोडक्शन ऑफ इमोनिया. कहते हैं ये जो इमोनिया मॉलिक्यूल है ना, ये हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है और इसमें हम कौन सी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं? These principles are from the chemical equilibrium. How you will learn many important things about chemical equilibrium in this chapter. So this was just an introduction to this chapter. इसमें जो basic चीज है जो कि आपने learn करनी है, that is there are two types of chemical reaction. One is complete reaction, in which what happens that reactants once converted into product never come back. And the second type of reaction is known as reversible reaction. And in this reaction, what happened? That reactants combine to give product and product recombines to give a reactant. So this was an introduction. If you have any question, you may ask. अगर नहीं है, so we shall proceed further.